the unit number 1 to 2 and then 2 to 3 and 4, 5 and 6. One to another signal. ये हमें अभी पहले understand करना है. And once we understand this, then we can go for this. So today's first lecture is for introduction to the signals and system, and then the subject. So what basically we understand in signals and system? The first, the word signals and system. So first we understand signals and system both are different words. Up till now we have heard many times, yes, that type of signal, here it is signals in technical life or in non-technical life. Okay, but when we are talking about in academics, in engineering particularly, we should know what is signals. Can anyone among you define signals? आप में से कोई बता सकता है? What is signals? Sir, it is analog. Okay, good. Analog is one of the type of signals. Very good. I appreciate it. Signals is nothing but what? I'll explain first definition mean technically, and then I'll explain how it occurs. Signals means what? Signal is nothing but what? It is any physical phenomena that carries or convey some information. I'll repeat. Please understand. Try to understand. What is signal? Signal is nothing but what? It is any fundamental physical phenomena. Any physical phenomena. Any fundamental physical phenomena that carry or convey some information. Now, that carries or convey some information is what? If I consider this is my sinusoidal wave, okay? Now, if this sinusoidal wave, if convey some information, I consider this is my signal. तो एक बात हमेशा दुनिया में एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, if any physical phenomena that carry or convey some information, then it is said to be a signal. Okay, now there are thousands, crores of types of signals available in the world. I'll repeat, there are so many types of signals are available. Then is it possible to learn every signal? Here it is. No. The answer is why? Because the signals which having some mathematical analysis, that signal will consider for engineering syllabus. अभी इसके पहले मैं बताता हूँ. As I mentioned, there are so many types of signals. Signals means what? It carries or convey information. वो आपको कुछ भी information बता रहा है. That is the signals. Okay, good. Now, जैसे आपने कहा कि it is analog signal. Yes, analog is one of the best signal in the world. But if we do some analysis on analog signal, then we'll realize there is some limitations in analog. Then we switch to the digital signals. And now the world is digitally connected. So before going to start discussion of analog and digital communication, I just want to make one example to understand what is signals. The definition says, yes, it is a physical phenomena that carries or conveys some information. Now, the signals means what? Just imagine, my dear student, because I am teaching in virtually. I know you are not positioned to understand my physical body languages, but try to understand through imagination. मैं क्लास में आपको पढ़ा रहा हूँ और कभी किसी एक स्टूडेंट के ऊपर मैं गुस्सा करता हूँ. लेट आता है क्लास में स्टूडेंट और उसको मैं गुस्सा करता हूँ. तो एक बात हमेशा देखिए, व्हेन आई एम एंग्री, तो मैं कभी कोई भी इंसान ये बताता नहीं है कि आई एम एंग्री. वो सिर्फ बॉडी लैंग्वेज से शो करता है कि ही इज एंग्री. So in that case, the next person understand by his appearance, by his body language, by his gesture and posture of body language, that person is angry on me. Now, without saying that I am angry, still the person is understanding that the person is angry on me. That is what type of signal? जब मैं किसी के ऊपर गुस्सा होता हूँ और बिना बताए उनको समझ में आता है कि ये सर हमारे ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, तो गुस्सा is a reflection of your signals. आपकी बॉडी रेडिएट कर रही है कुछ सिग्नल्स, एंड दैट सिग्नल्स विल बी अंडरस्टैंड बाय द स्टूडेंट. स्टूडेंट इसको अंडरस्टैंड करता है एंड देन स्टूडेंट विल मेक कमेंट, यस सर अभी गुस्सा है. सो दिस इज व्हाट द टाइप ऑफ सिग्नल. आई एम टेलिंग यू देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ सिग्नल. अभी ये तो सिग्नल गुस्सा वाला सिग्नल हम क्लास में नहीं पढ़ा सकते, बट प्लीज अगेन अंडरस्टैंड देयर इज अ
types of signal. Why? Because the signal which carries or conveys some information. Here, that student understand the information radiated by the teacher's body spectrum. That is nothing but what a signal. So there are so many types of signal. But when we are talking about engineering academics learning, then we concentrate on only few signals on the basis of signals and its mathematical attributes. So very good. The from answer from your side, yes. टाइप्स ऑफ सिग्नल में सबसे पहले होता है एनालॉग सिग्नल. ओके, तो कभी भी हम जब भी इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज सिग्नल्स, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ सिग्नल्स. ओके, ये जब हमें पता चल जाता है देन वी अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. यस, दिस इज व्हाट द पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ सिग्नल्स. सो introduction to signals, types of signals. This is what a very good concept. Hope so you can see here it is. Okay. Once you understand, एक बार आप समझ लिए कि आपको टाइप्स ऑफ सिग्नल्स पता चल गए. चलो फिर सेकंड क्वेश्चन आता है, व्हाट इज सिस्टम. क्योंकि सब्जेक्ट का नाम है सिग्नल्स एंड सिस्टम. जब सिग्नल्स एंड सिस्टम होती हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए व्हाट इज सिस्टम. नो, सिस्टम is nothing but what? It is the concept where we apply signal and take output from the system. कैसे? I will see. Now consider this box I consider as my system. Okay, so this box is my system. Okay, always remember input to the system and output to the system. Input and output to the system is always signals. इसीलिए ये बॉक्स होता है, that is what your system. Okay, okay, and here the input is signals. इसका शॉर्टकट में लिखता हूँ S of L, and output is also of my signal. So how you can correlate signals and system? So signals and system basically can be correlated by using there is a relation in between signals and system. System को input and system को output will be a signal. When I apply input to the signals, input signal to the system, that will be I consider as the input signal, this one. And when I apply to the system, when I received output from the system, that is considered as output of system. So basically, signals and system is nothing but what? The two different words, signals having their own classification and the system having their own classification. इसीलिए सबसे पहले हमें सिग्नल्स के भी टाइप्स समझ में आना चाहिए. उसके बाद once we understand the types of signals, then we'll go for types of system. So this is what does the concept. ये आपको एक बार समझ में आए कि चलो सिग्नल्स कैसे है, इसका क्लासिफिकेशन कैसे, एनालॉग, डिजिटल. ओके, उसके बाद टाइप्स ऑफ सिस्टम, सिस्टम लीनियर है, टाइम वेरिएंट है, स्टेबल है, अनस्टेबल है, स्टैटिक है, डायनामिक है. So this is nothing but what? This is the first step to understand introduction to the signal, system and their classification. एक बार हमें ये समझ में आ जाता है कि how to identify signal and how to identify system. When we achieve this target of understanding of classification of signals and system, then the next target starts with to understand transform theory. Transform theory means what? Transformation. जैसे कि आपको पता है, इसके पहले आपने सुना भी है फोरियर ट्रांसफॉर्म, उसके बाद अपने लैप्लास ट्रांसफॉर्म और उसके बाद आपने ट्रांसफॉर्म, जेड ट्रांसफॉर्म. तो इस ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी में अभी हम ये समझना चाहते हैं कि व्हाई एंड व्हाट इज द नीड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन सिग्नल प्रोसेसर. क्या आप में से कोई बता सकता है व्हाई वी डू ट्रांसफॉर्म ऑपरेशन ऑन सिग्नल्स? चुकला तरी चालेल ना, डोंट वरी, दिस इज व्हाट सिंपली डिस्कशन. Yes, anyone among you? What is the need of transformations? Okay,
Just tell me what type of transform you understand. At least enlist the name of the transform. क्या अभी तक कौन सी transform आपने पढ़े हैं या आपको उसके नाम पता है? Don't define it. Just give me the result. Data transfer. Okay. Data transform. Okay. Or Yes, sir. In the frequency of okay. Yes, Devesh. Answer. No. What types of transformation कौन सी होती है अभी तक आपने पढ़े होंगे? Laplace transform. Very good. और Fourier. very good. और Z transform. very good. So अभी तक आपने 3 ट्रांसफॉर्म पढ़ चुके हो. And appreciable the answer is what? आपने अभी तक मतलब इंट्रोडक्शन किया है मैथमेटिक्स में फोरियर ट्रांसफॉर्म, लैप्लास ट्रांसफॉर्म एंड जेड ट्रांसफॉर्म. तो क्या आप में से कोई बता सकता है कि ट्रांसफॉर्म हम यूज क्यों करते हैं? चलो आई एक्सप्लेन. ओके प्लीज. Yes, sir. Okay. Sir, data transformation is the process of changing the format. Very good. Appreciable, Pranav. See, as Pranav says, it is a data transmission from changing the position means what? If I want to change my signal from one domain into another, understand? देखिए, physically we realize in the world where whatever information is in time. अभी हम इस दुनिया में जो भी हमारे पास इनपुट है, मतलब सिग्नल्स है, that is in time. So I'll repeat, whatever information we have in this world, it is in time domain. But the question arises when we need to analyze signal in time domain. जब हमें टाइम डोमेन में सिग्नल को एनालिसिस करना हो, then it faces some issues. और सेकंड साइड आई कैन से टाइम डोमेन में सिग्नल एनालिसिस करने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. So what we can do? We do convert from signal time to frequency. So the process of conversion from time to frequency convert करना, that process is nothing but what? Transformation. तो ट्रांसफॉर्म क्या करता है? It simply converts time into frequencies. It simply convert time Sir, domain. असं म्हणू शकतो का analog to digital? No. You can convert signal analog to digital means what? Now see, here it is the analog signal. Yeah. Okay, this is what my sinusoidal signal, and this is what digital signals. Digital means what? Discrete signal. This is what digital signal. So this is my analog signal and this is my digital signal. But the question arises, time to frequency. जब हम कन्वर्ट करते हैं, प्रणव, see, analog and digital, this is the signals. Analog is a continuous signal. Yes, Okay, and digital is a discrete signal, means uniform and non-uniform signals. उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे. पहले एक समझ लीजिए, what is transform? Transform is converted into time to frequency. जब भी मुझे time to frequency convert करना है, I use transformation. So it is nothing but what? Transformation. So this is what transform. तो मेरा क्वेश्चन ये होता है कि जब फोरियर ट्रांसफॉर्म, प्लीज अंडरस्टैंड ना, प्लीज लिसन, फोरियर ट्रांसफॉर्म भी है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी है और जेड ट्रांसफॉर्म भी है. ये तीनों भी ट्रांसफॉर्म है. इसका मतलब ये भी है तीनों भी टाइम टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्ट करते हैं. फिर तीनों भी टाइम टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्ट करते हैं, तो फिर तीन क्यों पढ़े? कोई भी एक पढ़ लीजिए और उससे टाइम टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्ट कर लीजिए. Regarding my questions, if Yes, sir. ट्रांसफॉर्म थ्योरी सपोज कन्वर्ट करता है टाइम टू फ्रीक्वेंसी, तो फिर जेड ट्रांसफॉर्म भी कर रहा है, फोरियर भी करता होगा और लैप्लास भी करता होगा. फिर तीनों भी टाइम टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्ट करते हैं, then why to go for all these three transform? Just learn any one of them and continue and convert signal time to frequency. But still, in university syllabus, we have to understand both Laplace, Z and in addition to the Fourier. इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ तो भी स्पेशलिटी है. क्या आप में से कोई बता सकता है when we Laplace, when we use Fourier and when we use Z transform? Yes. My question. Have you got my question?
My question is so simple. If transform convert time to frequency, okay, agree. Then why to go for all these three, Laplace, Z and Fourier? Because these are the transformation and convert the time to frequency. If all these three are converting time to frequency, why to go for all these three? Go anyone among well and just convert it into signals. But no, the answer is what? We have to understand all these concepts. Time, Laplace, Z and Fourier. The first question arises, then what is the speciality of Laplace, or where I should use Laplace transform? Where I should not use Laplace transform? Where I should use Fourier and Z transform, and where I should not use Fourier and Z transform? My dear student, before going to understand any types of signal, my students should be in a position to understand, yes, what type of signal and system it is, and what type of transformation I'm going to apply on the signals. First, tell me how you got this question. Yep. Yes, sir. Okay, now answer is so simple. Now try to understand. अभी मैं explain करता हूँ. See, जैसे कि प्रॉब्लम में कहा एनालॉग एंड डिजिटल. So story starts from their point, and you will understand how it converts. Just imagine if I am having the signal. अभी मेरे पास एक सिग्नल है, वो है एनालॉग. ओके, और एनालॉग सिग्नल्स में मुझे कन्वर्ट करना है टाइम टू फ्रीक्वेंसी. एनालॉग सिग्नल्स में मुझे कन्वर्ट करना है, मतलब एनालॉग डोमेन में मुझे सिग्नल्स कन्वर्ट करना है टाइम टू फ्रीक्वेंसी. देन आई विल गो फॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म. Please understand, when my signal is analog, and in analog signal processing, I need to convert time to frequency, then there is only a application is available, that is nothing but what? Laplace transform. इस केस में फिर हम Z ट्रांसफॉर्म यूज नहीं कर सकते. This is the first story of Laplace transform. When signal is analog, so Laplace transform is only applicable for analog signal. जब डोमेन एनालॉग है and I can need to convert time to frequency, then I'll use only Laplace transform. Then second question, if my signal is digital, मतलब my information and signal is digital, and then I need to convert it time to frequency, then I'll go for Z transform. एक बात समझ लीजिए, when information is in time domain, when information is analog, I'll go for Laplace transform. When information my is digital, then I'll apply Z transform. फिर आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं where to apply Fourier transform. अब Fourier कहाँ पे यूज करना है? तो Fourier कहाँ पे यूज करना है? तो Fourier is a subclass of Laplace transform. And Fourier is a subclass of Z transform. तो इसका मीनिंग ये होता है कि Fourier transform is used in both Laplace transform and Z transform. इसीलिए Fourier transform को substitute of Laplace transform and substitute of Z transform कहा जाता है. So always remember, मैं एक बार फिर से इसको कंक्लूड करता हूँ. Transform is used to convert signal from time to frequency. Okay. Now there are three transformation we understand. Which one? Laplace, Z and Fourier transform. Laplace transform we apply when signal is analog and I need to convert time to frequency. Okay, good. So Laplace transform is only applicable for analog signals. What about Z transform? So Z transform is used for digital signals. When I am having the digital signals, then I need to convert time to frequency, I'll go for Z transform. You may have a question, what is the role of Fourier transform? Fourier transform is applicable for both in analog as a Laplace transform and its substitute, मतलब उसका छोटा सा पार्ट होता है Laplace का, और in Z transform it is a substitute of Z transform. That's why in engineering syllabus हम Laplace भी पढ़ते हैं, हम analog Z transform भी पढ़ते हैं, और हम Fourier transform भी पढ़ते हैं. फिर आपके पास एक क्वेश्चन होना चाहिए कि सर if signal Laplace transform